Translation series. आज कर बता ब्रोडकन lesson number 13 the Gumdrop affair translation पेश यह short story the Gumdrop affair translation पेश करने ब्रोट त्राव थोड़ा रोशनी टाइटलस पे the Gumdrop affair Gumdrop छ एक मिठाई नाव यह एक किस्म स्वीट affair गो मामला the Gumdrop affair छ एक इम्तिहानस नाव यह एक टेस्टस नाव या वन तो आजमाइश नाव इंटेलिजेंस एजेंसी पन्न सीक्रेट एजेंटन इम्तिहान हेवान वक्तन फवक्तन यह वुचन खतर कि तम सीक्रेट एजेंट काम करनस लायक कि तिमन मुझा सलाहियत तिमन मुझा काबिलियत तिमन मुझा हुनरमंदी तिमन मुझा जुरत हिम्मत और तिमन मुझा वफादारी कि यह वुचन खतर इंटेलिजेंस एजेंसी पन्न सीक्रेट एजेंटन वक्तन फवक्तन इम्तिहान हेवान इंटेलिजेंस एजेंसी मुख्तलिफ सीक्रेट एजेंटन मुख्तलिफ एग्जाम हेवान चूँकि नेचर मुख्तलिफ एजेंटन हंद मुख्तलिफ आसान मुख्तलिफ एजेंटन मकसद असाइनमेंट डिफरेंट आसान इसलिए एग्जामन नेचर डिफरेंट आसान इथे कन एग्जाम वारिया एग्जाम आसान करान अक्स एग्जाम तथ नाव थोमुत द गमड्रॉप अफेयर गमड्रॉप अफेयर तथ एग्जामस अम मूजूब नाव थोमुत क्या एग्जामस मज आजमाइश मज गमड्रॉप्स नजर गसान गमड्रॉप्स मिठाई स्वीट्स ट्रांसलेशन पेश गमड्रॉप अफेयर यानी कि एग्जाम तूता बोड़ नाव क्या अम इम्पार्टेंट काम खतर मगर डिपार्टमेंटन जह एडिसन बानबी सीरियस निमुत यानी कि डिपार्टमेंट एडिसन बानबीस लाइटली निवान इसलिए तो तमिस हल्का एग्जाम लकुट मोकुट एग्जाम यह सोरी गो तम सात बानबी सीक्रेट एजेंट अफ्रीका मज आमुत तैनात कर अक दीर वो तमिस पैकेज तम खोल पैकेट अंदरस कोडेड मैसेज ब्या लकुट पैकेट तथ मज गमड्रॉप्स मिठाई स्वीट्स बानबीन तुझो मिठाई गो ना तम लाजो खुन मगर मिठाई खाने ब्रो पे तमिस ख्याल कि ना बह कर गो मैसेज डिकोड बह कर गो मैसेज अंडरस्टैंड और सह गो खुश तम कर आराम सान मैसेज डिकोड अंडरस्टैंड शायद इम्तिहान गोनिस यह क्या इथे कन मिठाई कि यह कर मैसेज डिकोड मैसेज मज लिखने कि यम गमड्रॉप्स हसा बेसिकली एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद यह धमाका खेज मवाद वातना अकिस नफरस नश युस नफर यह ब्रोट कुन वातनाय तमिस नफरस नाव ब्रायन थॉम्पसन सह सीक्रेट एजेंट तम पन सारी जिंदगी पन ज्यादातर जिंदगी अफ्रीका मज गुजारम शिकार सन्दस रूपस मज गाइड सन्दस रूपस मज दमि दह सुबह तुझ बानबीन टैक्सी यह गो तथ होटलस कुन रवान ये नफर स्टे कर बानबी सड़क कार मज सवार सोचान डिपार्टमेंट में प्रत सात दूर दराज इलाकन मज सोजान बानबी पाई मे क्या सोजान क्या सतजी वुर पेठी पेठी मटोमुत मस्त नीर चलमुत यानी कि एक्सपीरियंस नफर मगर जन तलिम इंसान रोदमुत जालिम सीक्रेट एजेंट रोदमुत तम स लुक बड़ खुश गसान हालांकि तमिस डिपार्टमेंट वन चा गन तुलान पन्ने सेफ्टी खतर पानस सत मगर सह जन तस इंसानस मारनस मुतलिक सोचान वन वन .38 तुलान यह किस्म का पिस्टल किस्म मॉडल सह पिस्टल पानस सत तुलान मगर सह तुलान अनलोडेड यह यकीन करने खतर कि युथ तमिस कुन सात शरारत खसा तो सह कस मारित और बानबी बड़ खुश गसान पन्नी क्वालिटी कि तमिस मज किलर इंस्टिंक्ट क्या मारने जबलत तमिस अंदर क्या सह करान डेडिकेशन सान योत तमिस सोजान यथ जाए तमिस सोजान सह एक्स्ट्रा टाइम दिवान प्रत कुन काम पे यथ जाए तमिस सोजान सह तथ जाए मुतलिक स्टडी करान तथ कन लुकन मुतलिक स्टडी करान तथ कन कस्टमन कल्चरन मुतलिक स्टडी करान और यह क्या सह नॉलेज हासिल करान तम तमिस करनस मज आसानी गसान तमिस मार दाड़ जरूरत पेवान क्या कुन सात पे तमिस जोड़ जरूरत बानबी यह सोचान तुहंदिस सोच मज आई तम सात रुकावट युथे कार होटलस नजदीक वाच बानबी आव होटल लॉबी मज गो काउंटरस नश तथ दोपनुक ए ब्रायन थॉम्पसन कत रूमस मज तथ कूर तम दिन जवाब रूम 315
बारनबीन तो तमिस कोर अशांति यानी कि बारनबीन कोर सवाली लैंग्वेज में अफ्रीकन लैंग्वेज अत लैंग्वेज में कोर बारनबीन तमिस लड़की हूं शुक्रिया अदा बारनबी द्राव लिफ्टस कुन लिफ्टस खसन ब्रोट नु बारनबीन पन अथ कोट चंदस नश वुचन खतर सह पैकेट तम पानस सती ओनमुत कि ना बिल्कुल पानस ती ओनमुत सह तम मुश्त गुमुत क्या सह गो लिफ्टस पे त्रेमिस थर्ड फ्लोरस पे वो द्राव सह लिफ्ट मज नबर तम कोर पन पिस्टल चक सह अनलोडेड कि क्या अनलोडेड गन पे साथ सत तुलान और द्राव रूम नंबर 315 कुन दरवाज पे कोर नॉक कैस कालस प्रारो तत द्राव थोद नफरा तम खोल दरवाज तो बारनबीन दोनस बस छुस बारनबी तम नफरन त्रो बारनबी हेर पे बोन तम नजर ए कुसा जोका छु करान से बारनबीस कस बड़ शरारती बुझित कस नाज तम बास बारनबी सीक्रेट एजेंट बारनबीन दोनस पासवर्ड हसा कवारी तम नफरन दोनस अच्छा गो चुक या बस से थॉमसन वल अच अंदर बारनबी चाव कमरस अंदर तम शिकर तम सीक्रेट एजेंटन तो दरवाज बंद दरवाज कोर लॉक मे मे माफी बहुत दपान पन्ने जाए बारनबीन दोनस आसान बोड़ नफर कम वन थॉमसन दोनस अहन सा बिल्कुल बारनबीन दोस प्रत कह इंसानस एक्सपेक्टेशन आसान थॉमसन वन बारनबीस मगर चुक सीक्रेट एजेंट बसान क्या वुचित पे मे याद बार इस बह जानन बारनबीन कर नजर अंदाज तवहीन बारनबीन तमिस जवाब असल जवाब दिनस तमस प्रत कह इंसान कस इंसान से रलान मे तो पासवर्ड जवाब क्या अगर ऐसे पास मेहरबानी कर शायद इम्तिहान ब्या पार्ट थॉमसन हेसो बारनबी सुन दिमाग डाइवर्ट कर तमिस तवहीन कर मगर बारनबी गो तुम दिमाग गो डाइवर्ट क्या सह गो डाइवर्ट क्या तमिस गो मुश्किल पासवर्ड जवाब दिन क्या और तम नफर थॉमसन दिन जवाब माफी दी मे हतारी जवाब यह सही जवाब बारनबीन तुल पैकेट कोरनस हवाल सोरे मज थॉमसन दोनस वारिया ठीक असल निगरी बारनबी को हैरान निगरी लफ्ज बुझित क्या अम मतलब सवारी लैंग्वेज मज गंद सोर अम क्या लफ्ज इस्तेमाल अमिस अफ्रीकन लैंग्वेज पे सवारी लैंग्वेज पे होल्ड कहें अत दौरान थॉमसन बैग तुम तमिस टेबलस पे तुमुत सह बेडस नजदीक थॉमसन वोन बारनबीस ए कॉफी चीज मे सत बारनबीन दोपनस ए ना शुक्रिया मे कोर वनी ब्रेकफास्ट मगर बह ऐ मुतलिक जानन पन जिंदगी शिकर सदिस रूपस मज गुजारम चान जिंदगी गई बड़ इंटरेस्टिंग जिंदगी गुजरम चान जिंदगी गई बड़ इंटरेस्टिंग जिंदगी आसन थॉमसन दिन जवाब बड़ इंटरेस्टिंग मेन जिंदगी थॉमसन दोपस बड़ इंटरेस्टिंग मेन जिंदगी थॉमसन ब्यूट बेडस पे जोन सिगरेट चोन झूठ दावा बस आज तम लाइन तम राइनो तम वाटर बफलो मिस करान बारनबीन और बारनबीन सोच पानस सती वाटर बफलो एशियास मज तम अफ्रीकास मज क्या पज पे शिकर सह कर गलतिया क्या नॉन सेंस कथा कर क्या बारनबीन त्रो नजर थॉमसनस कुन सिगरेट चवान ब्या नजर त्रोन तक पैकेटस कुन पैकेट बारनबीन अमिस हवाल कोर्मुत थॉमसन वोन बे बारनबीस मे आज फेरान तिमन टेंटन हूं तम ताज़ हवुक थॉमसन ब्या झूठ दामा बारनबीस पे नजर थॉमसन एलिफेंट टेल ब्रेसलेट लोगमुत दशनिस हथिस बारनबीन दोपनस मे बसान एलिफेंट टेल ब्रेसलेट लोगमुत थॉमसन दोपस अहन सा मे सा मोर पान सह बदरू हुस 5 घंटन कोर तमिस हसिस पीछा और फाइनली मोरम फाइनली कोरम तुन शिकार 7 पाउंड आइवरी गई मे हासिल बारनबीन दोपनस ब्रेसलेट वारिया असल मगर बे सोच बारनबीन पानस सती शिकार पान शिकार कर ब्रेसलेट बनावान सह ब्रेसलेट दशन खोड़ नड़ लागान न कि दशन नड़ि दशन नड़ ब्रेसलेट तमें लागान यमन सानि कल्चर सानि रवाज पाई पता कहें यानी कि बारनबीस कोर पूरा शक
थॉमसन सही नफर कह बानबीन कोट चलमस पिस्टल कोर थॉमसनस कुन आय थॉमसनस कस बड़ शरारत तम सुन सिगरेट एस्ट्रे मज दोपस ए क्या सा दलील गई चे बानबी दोपस कहें न सा कुन थॉमसन तम दारुन तस वापस जवाब कित कन वन बह थॉमसन कित कन पाई बानबी दोपस मगर फिक्र वथोद पको कुन बानबी यसान सह पैकेट वापस हासिल कर तब पत कर सह डील थॉमसनस सत थॉमसन दोपस ठीक थॉमसन लोग तम जाय नश वार 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 हटन मगर अत असनास मज लगो थॉमसन बानबीस कुन डाइव बानबी आव पत्थर लायन थॉमसन तो बानबी लज थप मिलनावन अत असनास मज थॉमसन बानबीस नश गन छीनित और थॉमसन वोन बानबीस बानबी मे दी माफी बस ब्या सिक्रेट एजेंट यसान मारन कह मगर वनकस मे मारन जरूरी थॉमसन दबो ट्रिगर बंदूकस गई अख आवाज क्लिक गो मगर गूल द्राय न कह थॉमसन दबो बे ट्रिगर ब्या क्लिक गो गूल द्राय न कह बानबीन दोपनस हे यह लोडेड गन कह थॉमसन कस बड़ शरारत दोपनस यह लोडेड कह थॉमसन लगो ब्या डाइव बानबीस कुन बे लगोन पिस्टल तो बानबीस कुन बानबीन कर थॉमसन सद दोनोनी अतन थप यम लड़ाई चुवान थप मिलनावान अथ असनास मज कोर बानबीन क्युतान छला थॉमसन वुड़ो हवास मज तो फाइनली पे पत्थर चंद गो बस तमिस क्या तम लाज क्रग दिन तमिस कर दग सरसी पानस और बानबीन वोन थॉमसनस मे दी माफी मे कोर चे बानबीन नम्यो बानबीन कर थॉमसन सजन दोनवनी नड़न बेडस सत गंड पत गो टेबलस नश तुलन सह पैकेट ये मज एक्सप्लोसिव गमड्रॉप्स तो लोगन नेरन यह नफर यम गुंड थॉमसन पन्नस पानस वनान तम करे थोद वतन कोशिश मगर सह हेक थोद वत कह तम लग क्रैक बानबी च रुक अख मिनट सह पज पे डिपार्टमेंट नफर अकी डिपार्टमेंट नफर मे दी हावन मौका शायद बे कर चाल बानबी हिलो न पन्ने जाय कह मगर इस नफर गणन आमुत यानी कि थॉमसन अनड़ हिसाब मज छाड़ान क्या फाइनली कोर तम चंद मज कार्ड तो वोन बानबीस बानबी ये कार्डस कुन नजर यह आम कार्ड मगर अत कार्डस पे स्पेशल नंबर इस डिपार्टमेंट इशू करान एमरजेंसी आइडेंटिफिकेशन खतर बानबीन पर्जनो यह नंबर बानबीस कह नित हे मेन खुदाया मे क्या कोर अमिस बेस नफर आव असन इस गंडित थॉमसनस और तम वोन बानबीस वक्तन फवक्तन डिपार्टमेंट पन्न सिक्रेट एजेंटन इम्तिहान हेवान कि तम वफादार तिमन मज हिम्मत तिमन मज सलाहियत सा गो पास यह इम्तिहान चाने खतर गो कामयाब बानबीन दोपनस ऐ मे गूल चलायत मैनी गन से मारन हचित थॉमसन वोनस ना मोन निशान कुन कह बानबी दोस अच्छा अच्छा ठीक तेल दी मे माफी मे कोर जोड़ू ऐ खिलाफ इस्तेमाल मे दी माफी अमे खतर बानबी नम्यो तम थॉमसन सज नड़ खूलित और थॉमसन वो थोद तम पकनो अत पन ब्रो कुन हैंडशेक खतर दोपनस फैंक गत्री मे असली नाव बड़ मजा मे बानबी ऐ सत बानबीन कोर हैंडशेक तम सह वन दोनवनी असन फैंक गत्री इस वन तम पन्नस पानस थॉमसन वन फैंक गथरियन वोन बानबीस मे बार बार वन गो सह इम्तिहान पार्ट मे दी माफी बानबीन दोपनस माफी मंगने जरूरत कह मंग माफी बस पज पे अकिस बार बार स्यू बासान बानबीन कोर तम पत पन्ने कोट कि चंद मज सह पैकेट बे नबर तेल चोन मतलब गथरिस तोर समझ यह क्या वन दोपस अहन सा आ बिल्कुल चोन सोचन सही बानबीन त्रो तक पैकेटस मज अत तम न्यू मिठाई गोल कड़ित गमड्रॉप कड़ित तम त्रो सह मज सह बड़ मजेदार लेमन फ्लेवर The Gumdrop Affair by Ralph E. Hayes.
The Gumdrop affair was not much of a name for such an important assignment, but then the department never had taken Edson Barnaby seriously. It all started while Secret Agent Barnaby was stationed in Africa. Late one night, he received a mysterious package. Inside was a coded message in a small white paper bag filled with gumdrops. Barnaby started to eat one, but he decided to decode the message first. He was glad he did. The message said that the gumdrops were sugar-coated lumps of a new jelly explosive. Barnaby was to take the gumdrops, that is, the explosives, to a contact man who would deliver them into the right hands. The contact's name was Brian Thompson, an agent who had spent most of his life in Africa and had made his living as a wild game hunter and guide. The next morning, Barnaby took a taxi to the hotel where the contact man was staying. As Barnaby rode along, he thought about how the department always sent him to out-of-the-way places. He knew why, of course. He was over 40 and getting fat and bald. He had never been a cold-blooded secret agent. Probably because he liked people too much. Even though the department insisted that he always carry a gun, he would never think of killing anyone. Lately, in fact, he had begun to carry his .38 unloaded just to be sure he would not shoot somebody by mistake. Barnaby liked to think he made up for his lack of killer instinct by being dedicated to his work. On every assignment, he always spent extra time learning about the country and the customs of its people. And what he learned often helped him get the job done without the use of anything more violent than judo. Barnaby's thoughts were interrupted by the taxi's arrival at the small African hotel. In the lobby, Barnaby went up to the desk and asked for Brian Thompson's room. "Room number 315, sir," the girl said. "Ashanti," said Barnaby, thanking the girl in Swahili. As he headed for the elevator, he carefully patted his coat pocket to make sure the small white paper bag was there. No, he had not forgotten the sugar-coated explosives. He got off the elevator on the third floor and walked to room 315. He checked his gun to be sure it was empty. Then he knocked and waited. The door opened and a tall man said, "Yes?" "I am Edson Barnaby." The man looked him up and down. "Is this some kind of a joke?" Barnaby frowned. Nobody ever took him for a secret agent. "The password is Kawahiri," he said patiently. "Oh yes, so it is," the man said. "I'm Thompson. Come in, come in." Barnaby stepped into the room and the African hunter quickly shut the door and locked it. "I'm sorry," he said. "I'd expected a larger man." Barnaby smiled. "Well, yes. Everybody does." "You don't look like a secret agent," Thompson said. "In fact, you reminded me very much of a barber I used to know." Barnaby did not mind the put down. "Everybody looks like somebody else," he said. "What is the answer to the password, if you please?" "Oh, sorry, Hatari." It was the right answer. Barnaby pulled the white bag out of his pocket and handed it to the man. "It is all there," Barnaby said. "Fine," said Thompson, looking at the bag. "Nigri." Barnaby looked up in shocked surprise. The man had just said warthog in Swahili. Why would he say that unless he didn't really know the African languages very well? Meanwhile, Thompson had taken the bag and placed it on a little table near the bed. "Will you have coffee with me?" he asked. "No, thanks. I just had breakfast," Barnaby said. "I didn't mean to ask
you about your life as a hunter, though. It must have been an interesting way to make a living. It was. The man sat on the bed, lit a cigarette, and took a long drag. Even now I miss the lions and rhinos and herds of water buffalo. Yes, yes, Barnaby said, nodding his head, but he thought to himself, water buffaloes? They're found in Asia, not Africa. A real hunter wouldn't make such a mistake. Barnaby watched the other man smoke and glanced at the bag of explosives that was just a few inches away. Yes, I miss the tenting, the fresh air, Thompson was saying. He took another puff from the cigarette, and now Barnaby saw that he was wearing an elephant tail bracelet on his right wrist. I see you have an elephant tail bracelet, Barnaby said. The man looked at his wrist. Yes, killed the poor devil, stalked him for 5 hours, 200 pounds of ivory in his tusks. The bracelet is very nice, Barnaby said. But again, Barnaby thought, a hunter wouldn't wear the bracelet on his right wrist if he had killed the elephant. He would wear it on his left wrist. The bracelet is worn on the right wrist only by tourists who don't know anything better. Quickly, Barnaby pulled out his gun and aimed it at Thompson. Thompson's eyes narrowed and he threw his cigarette into an ashtray near the bag of explosives. What is the matter with you? He asked. Nothing. It is you, said Barnaby. You are not Thompson. The man looked at the gun. How did you know? Never mind, said Barnaby. Just step away from the table. He wanted to get the explosives back and then he would deal with Thompson. All right, the man moved away slowly. Then he dived at Barnaby, hitting him hard and throwing him to the floor. When they had both struggled to their feet, Thompson had the gun. Sorry, Barnaby, he said. I don't like to kill another agent, but this time it is necessary. He squeezed the trigger, but the gun just clicked harmlessly. He squeezed again. Another click. It is not loaded, said Barnaby. Not loaded? The man said. He shook his head and frowned. Then he jumped at Barnaby and swung the pistol at him. But Barnaby grabbed the man's hand. The next moment the man who called himself Thompson flew through the air and sprawled on the floor, groaning. Sorry to have to do that, Barnaby said. He leaned down and handcuffed the man's left arm to the bed. Then he went to the table, put the bag of explosives in his pocket, and started to leave. The man on the floor tried to stop. Hold everything, Barnaby, he said. I'm really a department man. We are on the same side. Let me show. Was this some kind of a trick? Barnaby didn't move. The handcuffed man took a long time fumbling through the things in his billfold. Finally, he pulled out a small card. Look at this. It was an ordinary-looking card, but Barnaby could see that it carried a special serial number that the department used for emergency identification. Good heavens, Barnaby said. The other man smiled. Every once in a while, as you know, the department tests its secret agents for loyalty, courage, and ability. You just passed. But you tried to kill me with my own gun, Barnaby said. No, I aimed over your left shoulder. Oh, I see. Well, I'm sorry about having to use judo on you, said Barnaby. He unlocked the handcuffs and the other man held out his hand. Frank Guthrie, he said. It is real pleasure, Barnaby. Barnaby shook his hand and both grinned. That barber bit was just part of the test, Guthrie said, to make you believe the whole act. Don't apologize, Barnaby said. I do look like a barber. He pulled the paper bag out of his pocket,
looked inside curiously, then glanced up at Guthrie. "Do you mean?" "Yes," Guthrie admitted. Barnaby took a soft, sugary lump out of the bag and popped it into his mouth. He bit down on it. It was lemon and delicious.